Hello everyone. So the next plant in the series of Plants for Beginners is the turtle vine. Please watch the video till the end and don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Just look at the symmetry of the leaves of this beautiful plant. Isn't it looking like a small turtle? इस सक्यूलेंट क्रीपिंग प्लांट की लीव्स की सिमेट्री एक छोटे से टर्टल से रिजेंबल करती है. इस रीज़न से हम इसे टर्टल वाइन कहते हैं. As per the name, you can see the cluster of leaves I'm holding in my hands are totally resembling like that of small turtles. This vine is often used to feed turtles and other reptiles, hence is its name. Turtle vine is also known by the names Calesia or the creeping inch plant. Turtle vine एक perennial, ornamental, creeping और herbaceous succulent plant है. इस plant को primarily ornamental purposes के लिए ही यूज़ किया जाता है. If we talk about the habitat of this plant, इस प्लांट को प्लेस करने के लिए बेस्ट लोकेशन वही है जहाँ पे इसे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट थ्रू आउट द डे मिलती रहे. इफ वी टॉक इन पर्टिकुलर अबाउट द डायरेक्शनल डायमेंशंस, ईस्ट एंड नॉर्थ फेसिंग विंडोज और द बालकनीज कैन बी द बेस्ट ऑप्शन. You can see the vine that is hanging behind has been placed at a location of indirect sunlight by me. The invasive nature of this plant is something that is not actually a very good characteristic of it. You can see मैंने कुछ reusable planters में इस species को grow किया था और with time it is forming a mat on the cement itself. If you are growing this plant with a sensitive species, chances are there it could damage it. The first method is the soil propagation. As you can see, मैंने hanging planters में लगी turtle vine को source plant ले रखा है. As followed in the previous videos, we will follow the same method for cutting the plantlets. I am using a sharp scissor for cutting the vine plantlets into small cutting. एक एक करके हमने सभी stem cuttings को collect कर लिया और अब हम next step में इन्हें one by one propagate करेंगे. मैंने already planter की soil में कुछ incisions पहले से ही बना रखे थे. Now I am aligning the stems one by one in the same way we did for the other plants. As I shared, ये एक invasive species है, तो हमें ध्यान रखना है कि plant cuttings को place करते हुए उनके बीच में proper spaces बने रहें. The regeneration and multiplication capacity of this plant is surprising. हम already potted stems के ऊपर लगे extra parts को cut करके उन्हें again propagation के लिए use कर सकते हैं. And I am doing the very same. It is not mandatory for the stems to be penetrated deep inside the soil. आप simply इन्हें soil bed पर रख के भी छोड़ सकते हैं. ये easily roots catch कर लेंगे. So this is how soil propagation of this plant is done. The second method is the water propagation. As you can see, I am repeating the same process again that I did for the soil propagation method. Same उसी method को follow करके हम कुछ stem के cuttings अलग कर देंगे और उन्हें एक एक करके already पानी से भरे एक glass के अंदर डाल देंगे. We will keep this glass with the cuttings undisturbed for next few days until the roots come. I have propagated few turtle vine stems by water propagation method inside a hand-painted bottle. आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप टर्टल वाइन को अपने आइडिया से ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए कैसे यूज़ करते हैं.
ताकि हमें कलेक्टिवली कुछ डेकोरेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ भी मिले. You can see how beautifully they have grown up and how gracefully they are looking with their appearance. So finally, the first planter is the mother plant. Moving with the next is the black planter with the soil propagated turtle vines. Next is the water propagated turtle vine, and last planter is again the same mother plant. So this is whole from my side about this very beautiful and easily propagated creeping plant. आपको ये वीडियो और इससे जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज़ अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. थैंक यू.